Hey, if you haven't already, subscribe to my channel and also visit my Facebook page. अस्सलाम वालेकुम and hello my YouTube family. अच्छा, आज हम बना रहे हैं breaded chicken bread. The dough you're watching right now has already been made and I've already shared a recipe of how to make pizza dough. It's exactly the same. Don't worry if you miss the ingredients because I'll repeat them in the end. अच्छा, तो ये डाल दें जी इसमें बटर. ठीक है, इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें. So the first step is to add butter, let it melt a little, and then we'll be adding our onions and we'll just saute them. The next thing to go in is 3 to 4 tablespoons of plain flour. 3 से 4 जो है ना चम्मच आप इसमें मैदा डाल दें. Add 1 small cup of milk. We had already boiled this chicken and shredded it. That goes in. अब ये boil किया हुआ जो हमारा chicken है वो अंदर चला गया है. The next thing to go in is salt and black pepper. I have hardly cooked it for 1 to 2 minutes after pouring in the milk, and that's how it looks. So these are the vegetables I have chosen: mushrooms and red peppers and spinach, but you can choose whatever you want, and you can use frozen vegetables if you like. We only cooked our spinach for 1 minute and it has gone really soft. 1 मिनट पकाया है, इसकी हालत देखें गैर हो गई है. तो इसको ऐसी ग्रीन को अंदर डालें और इसके बाद अपनी बाकी वेजिटेबल्स भी डालें. Put all the rest of the vegetables in and then give it a good mix. Mushrooms and last but not the least, my peppers. We wanted some green coriander in, so that goes in, and some olives too. So now is the time to make the coating. So we'll take 1 egg, pour a little bit of milk in it and mix it together. ये जो भी हमने अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया ना, ये बाद में जब हमारा वो ब्रेड तैयार हो जाएगी और हम फिल कर लेंगे उसको और उसमें जाना होगा ओवन में, तो उससे पहले उसके ऊपर ये लगानी होगी क्योंकि उसके ऊपर हमने लगाने हैं तिल ताकि वो तिल चिपक सकें. तो ये है. ओके, सो आवर डो हैज़ रिजन. अब जी हमारी डो रेडी है और अब असल काम शुरू होने वाला है. इस पूरे चिकन ब्रेड की सबसे जो इसमें मेन चीज़ है ना, बाकी तो डो भी आप बना लेते हैं, मटेरियल भी बना लेते हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि इसको आपने जो है ना शेप कैसे देनी है. सो द की एलिमेंट इन दिस रेसिपी टुडे इज़ हाउ यू गोना मेक द पैटर्न ऑफ द ब्रेड. जस्ट टेकन द डो आउट. अब जी हमने डो निकाल लिया. अब इसके सेक्शंस करेंगे और जो है ना फिर उसको शेप देते हैं. सो वी नाउ डिवाइडिंग द डो इनटू 4 इक्वल हाफ्स. So long and wide. So we'll put the filling in the center. And the show begins. I think whatever you cook should look presentable because I think that makes a huge difference. Exactly in line with each other. Time to put some cheese in. I have taken the mozzarella cheese. अब इसके ऊपर जी आप रखते हैं थोड़ी सी चीज़, जो भी चाहिए आपको पसंद है, लेकिन ये मैंने मोज़रेला चीज़ रखी है. बीच में थोड़ी सी जो है ना आप चिली सॉस मैंने डाल दी है. ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस एंड नाउ स्टार्ट मेकिंग दिस पैटर्न. You follow the recipe and I bet it's gonna turn out really good.
So next step, the egg and milk mixture that we made, we'll just apply with a brush. I have taken some sesame seeds and some onion seeds. I'll show you in a minute. I'm gonna mix them both. So the black ones are onion seeds, the other ones are sesame seeds. तो तिलों को और जो ना कलवंजी को mix कर लें. So now sprinkle these seeds on top of your bread. Meanwhile, I've turned the oven on to preheat it. अच्छा जी, oven को इतनी देर में preheat कर लें. और look at this, अभी बगैर बने भी it's looking really good. 180 degrees and I've put an alarm on for 15 minutes. अब 180 दर्जा हरारत पे आपने इसको पकाना है. 15 मिनट के लिए मैंने टाइमर लगाया है. Let me know how is this looking, and if you try it, leave me a feedback, and I will see you in my next video. It only needs a click to subscribe, so why are you waiting?